Welcome to today's class. The name of topic Dictionary. In this session, we will learn about Python dictionary in detail. First question comes in our mind, what is dictionary in Python? So student, a dictionary is a collection data type which has key value pair. It is a collection of data type just like sets and list, but there are certain features that makes dictionary unique. So let's take a look at a feature of Python dictionary. First of all, it is unordered. We can change value in a dictionary as well. Since it is mutable, also it has a key value pair which like a map that we have in another programming languages. It is indexed as well. Since keys are distinct, we can use as index to access or change any values in the dictionary. And last one, a dictionary doesn't have any duplicate member as well. Now that we know what is a dictionary in Python is, let's talk about why we use dictionary in Python. First of all, the reason would be it is unordered and stored data like a map. So it is one unique feature that Python dictionary has. Student, it contains key value pair unlike other data types or object. It is almost similar to real life dictionary where we have distinct key values and corresponding to these values there are respective definition. In case of dictionary, even though there are no duplicate members student, we can mention duplicate member in the values, but the key has to be unique in order to access these members. Since there are no indexes, also we use keys as indexes when accessing these elements. Now that we have learned about why we use dictionary, let's understand how it is different from list in Python. So I have listed on the difference between a list and dictionary. Students, so first of all, list is ordered but dictionary is unordered. The next one is list has indexes but in order to access element in a dictionary, we use keys as indexes. The next one would be list is collection of elements, but in dictionary we have key value pairs as elements. Student, which are unlike any other data type in Python. Next one is list is often preferred for order data, but dictionary is preferred when data has unique key values. So this is actually differentiate list from a dictionary student. And the next one is list have duplicate elements as well, but in dictionary we do not have any duplicate elements when we are declaring key. So these are the differences between list and dictionary. I hope you are clear with the difference between those two. Now we have understood what a dictionary is in Python and why we use it and how it is different from list. Let's try to understand how we implement dictionary in Python or how we create or access the dictionary in Python. Now first of all, a dictionary represents a group of elements in the form of key value pairs. Dictionary in a Python is an unordered collection. Dictionary are mutable, so we can modify its item without changing their identity. Dictionary are represented using curly bracket. तो student, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है एलिमेंट्स का, साथ ही इसके अंदर हमें किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हमें की कॉलन वैल्यू पेयर का यूज करना होता है. स्टूडेंट, dictionary just like an English dictionary. You can search for a word's meaning because for each word there is a meaning associated with it. In the same manner, Python dictionaries have some keys just like English dictionary have words and associate value just like English dictionary have associated meaning for every word.
Dictionaries are containers that associate keys to value. Student, similar to list. In a list, you must remember that index value of an element from the list. But with the case of dictionary, you will have to know the key to find the element in the dictionary. Dictionary are represented using curly bracket. Student, to create a dictionary, you need to include the key colon value pairs in curly braces as per given following syntax. First of all हम क्या लिखेंगे? Dictionary name, then equal sign, curly bracket open. In a first position you write key, after that colon symbol, then value, कॉमा सेकेंड की कॉलन वैल्यू. देन इसी टाइप से हम आगे हमारे डिक्शनरी में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे. द स्टूडेंट, हियर following is an example dictionary by the name STU that store the roll number of a student as a keys and the name of a student as a value of respective keys. In example, the name of dictionary is fees. Then Rahul is the name of a student as a key and the value of a student 2000. स्टूडेंट, यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे 101 लिखा है वो की को रिप्रेजेंट करता है. देन कॉलन सिंबल के जस्ट बाद में जो राहुल लिखा हुआ है वो उस की से रिलेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. एंड द STU इज द नेम ऑफ दैट डिक्शनरी. स्टूडेंट, आपको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे. फर्स्ट पॉइंट, द कर्ली ब्रैकेट मार्क द बिगिनिंग and end of the dictionary. Second, each entry consists of a pair separated by a colon. Means अगर आप डिक्शनरी में की कॉलन वैल्यू रखते हो तो हमेशा हर एक वैल्यू देने के बाद आपको क्या लगाना होगा? कॉलन. द की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन बाय राइटिंग कॉलन बिटवीन देम. हर की और वैल्यू के बीच में आप क्या इंक्लूड करोगे? कॉलन. द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कॉमास. हमेशा जब आपका की वैल्यू पेयर एक कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट आपको कॉमा यूज करना होगा. स्टूडेंट, हम डिफरेंट टाइप से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल सी हाउ वी क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी. एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है? डिक्शनरी नेम इक्वल then curly bracket open and close. Now here one example is present. Fees equal to curly bracket open and curly bracket close. It is an empty dictionary with no elements. ना स्टूडेंट, आफ्टर दैट हम कुछ एलिमेंट लेके डिक्शनरी क्रिएट करना देखते हैं. हाउ वी क्रिएट अ डिक्शनरी. A dictionary is created in the form of key value pair where keys can't be repeated. means आप की को repeat नहीं कर सकते हैं and must be immutable. And values can be of any data type. value किसी भी data type की हो सकती है, चाहे वो string हो चाहे वो number हो, and can be duplicated. Keys are case sensitive. Student, we had already seen the syntax of dictionary and we had already seen these two examples STU and fees. Now in third example इसी डिक्शनरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. मीन्स कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद एंटर की प्रेस की है ताकि यूजर को बहुत ही इजी वे में कीज और वैल्यू के बीच डिफरेंस समझ में आ जाए. Student, in a next video, we will see the key rules of a dictionary and how we access the element of a dictionary. While writing key, we must follow the following rules. First, key should be unique. की हमेशा क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए. मीन्स डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए. If you mention same key again, that old key will be overwritten. Key should be immutable type. For example, integer, string or tuple. We cannot use list or dictionary as key. स्टूडेंट, ये कुछ रूल्स थे जो आपको फॉलो करने होंगे जब आप डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे. फर्स्ट रूल हमने देखा कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, की शुड बी यूनिक.
अगर आप सेम की अगेन मेंशन करते हैं तो वो ओवर रिटर्न हो जाएगी। की का टाइप इम्यूटेबल होना चाहिए। एंड लास्ट, हम लिस्ट और डिक्शनरी को एज अ की यूज नहीं कर सकते। आफ्टर दैट, एक्सेसिंग डिक्शनरी। We can access the value of a dictionary by referring to its key name inside square bracket. स्टूडेंट, यहाँ पर STU नाम की डिक्शनरी प्रेजेंट है, जिसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम डिक्शनरी का की नेम यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम समझते हैं इसे। Here 101 is a key and Rahul is the value of that key. 102 is second key name and the value of 102 is Raj. After that 103 and the value of 103 key is Sonam. The student, to access the element of this dictionary, we use print statement. In a print function, we used STU the dictionary name and access by its key name 101. जैसे ही हमें अगर स्टूडेंट डिक्शनरी के 101 की वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? की नेम का। इसी टाइप से सिमिलर वे में हम सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की नेम। Student, when you will write print STU101, then value of that key display on your computer screen. After that, अगर आप print STU102 लिखते हैं then राज कहाँ डिस्प्ले हो जाएगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। सिमिलर वे में अगर हम सेकेंड डिक्शनरी देखते हैं फीस, तो उसके की नेम क्या है? राहुल, एंड एसोसिएटेड वैल्यू क्या है? 2000। तो स्टूडेंट, अगर हमें सेकेंड का भी प्रिंट करवाना हो, एक्सेस करना हो एलिमेंट का, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से इसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, this to access the value for key defined as 101 in the above declare STU dictionary, you will write STU and the name of that key. Then Python will return Rahul. Similarly, print fees in a bracket Rahul will give output as 2000 because the value of that Rahul key is 2000. Student, while giving key inside square brackets gives you access only the value corresponding the mentioned key. Mentioning the dictionary name without any square brackets prints or display the entire content of the dictionary. मीन्स आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हो की को, तो सारे एलिमेंट डिक्शनरी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। स्टूडेंट, the only way to access a value is through key. Thus, we can say that keys act like indexes to access values from a dictionary. I hope you must have understood the basic concept of dictionary. Okay, student.